सेल्स एस्टिमेशन का मतलब है एक मंथली एक्टिविटी दैट टीएसआई डज फॉर every single distributor, looking at the historical sales and looking at the coming month as a season or festival or holiday. The TSI projects SKU by SKU level sales for the next month for each distributor. I repeat, एक TSI हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए, सीजनैलिटी को देखते हुए, इस महीने आने वाले महीने के फेस्टिवल्स को देखते हुए द TSI प्लान्स, एस्टिमेट्स, एक टारगेट बनाता है कि कौन कौन सा SKU कितने कितने यूनिट्स सेल होंगे इन द नेक्स्ट मंथ फॉर एवरी सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर. अगर उसके पास 8 डिस्ट्रीब्यूटर है तो फॉर एवरी 8 डिस्ट्रीब्यूटर ही विल मेक ए प्रोजेक्शन SKU बाय SKU कि किसका कितना क्वांटिटी सेल होगा इन द नेक्स्ट मंथ. इसको हम कहते हैं सेल्स एस्टिमेशन. व्हाई सेल्स एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? सेल्स एस्टिमेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लानिंग ऑफ द स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग एंड मूवमेंट टेक्स प्लेस. जैसे आप एक TSI हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में इस कंपनी के बहुत सारे TSIs हैं. सारे TSIs का एक डेटा कोलेट होकर के एक बड़ा नंबर निकल के आता है. दैट बिग नंबर इज पास्ड ऑन टू द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री. कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास या फिर फैक्ट्री के पास ये प्रोजेक्शन जाता है विच इज क्यूमुलेटिवली एग्रीगेटेड एंड सम टोटल इज मेड by the ASM and then the RSM and then the NSM and submitted to the factory or to the person who aggregates pan India stock requirement. तो सेल्स एस्टिमेशन होगा तो प्लांट प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस करके स्टॉक को नीचे मार्केट में वाया CFA एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आएगी. नाउ द क्वेश्चन इज इट एवरी मंथ फैक्ट्री लुक्स एट दिस डेटा एंड देन प्रोड्यूस? No. The idea is that basis this projection, whatever is there with the company, that is passed on to the market and new production plan goes with the plant. They make the new production which moves to the market. Next point is the minimum distributor inventory calculation. इसका क्या मतलब है? The TSI makes the sales estimation for the next month. When he is doing so, he keeps in mind what is the quantity that must be at distributors godown. What is the total quantity that can be sufficient to service the market's order. अगर आने वाले 7 दिनों में इतना ऑर्डर आ जाएगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतना स्टॉक है कि वो सारे ऑर्डर्स को सर्विस कर सकता है? If the answer is no, then there is a serious problem because it could be a sale loss situation. Therefore, TSI has to estimate and make the calculation for enough inventory or stock to be kept at distributor. Normally it is 7, 14 or 21 days ka stock. Looking at the market sales historical data, and this much stock must be kept in the godown of the distributor. So this investment of distributor in the stock is very important so that even if there is any surge or sudden sale or any change in demand, it should not be no show, it should not be no stock availability. It should actually take the opportunity of this kind of demand and the sale should be increased. So minimum distributor inventory calculation is another important reason that sales estimation and proper sales estimation must be done by the TSI for each of the distributor. अगला पॉइंट है highlight any change in product or SKU demand. इसका क्या मतलब है? If there is any change in demand pattern because of seasonality or because of competition's change in product, or if there is no more demand for your product vis-a-vis competition, in that situation you must make a note and submit to your up hierarchy so that they consolidate and present it to the management, and whatever necessary strategy change has to be done,
or amendment has to be done, that company level can decide and give for implementation. A TSI or the salesperson must monitor the competition for its MRP, for its pack size, for its margins, for its trade schemes. And why it is important? Because if the competitions, these factors are better than your company product, in such a situation, their sale will be better than yours, and your sales will eventually start falling, and it will fall to an extent where you will bleed in terms of making losses. So any change in product demand or any specific SKU level demand की अगर shift आती है, that must be highlighted and presented to your area sales manager or up hierarchy level. So this helps in doing proper estimation about the product. That can go into the planning, or it can go into the manufacturing plan level, so that proper number or adequate stock can be planned, and there is absolutely, all situations, surge in demand or fall in demand, all situation can be managed. कहीं ऐसा ना हो जाए सेल गिर गया और हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है, कहीं ऐसा ना हो जाए ऑर्डर आ गया बट हमारे पास स्टॉक नहीं है, राइट? So this kind of situation must not arrive, and therefore it is important that sales estimation होना बहुत जरूरी है, and this is one of important role of the TSI.